Hi, welcome to its personal series presented by Kotak Securities and flipitmoney. This is Indu Chaudhary और हमारे गेस्ट मिस्टर कल्पेश अशर भी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं. थैंक्स कल्पेश फॉर जॉइनिंग इन. थैंक यू. कल्पेश, हमारे लास्ट एपिसोड में आपने बताया था कि इन्वेस्टमेंट लिंक्ड गोल प्लानिंग इज द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट? एब्सोल्युटली. सो अगर ये हार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग की, सो ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. तो आखिर ये चीज़ है क्या, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड गोल प्लानिंग? और जब हम इस टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप और व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप वी शुड ऑल टेक टू एंटर इनटू दिस पार्ट? एब्सोल्युटली. और बिल्कुल आपने सही बताया कि इट इज़ द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. एंड व्हाई आई कॉल इट द हार्ट इज़ बिकॉज द होल प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इससे जुड़ी हुई है. और अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि पर्पस, एक कारण होना ज़रूरी है कि हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं. तो इसके लिए मैं पहले 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ कि हम पहले पैसे अगर हमारे जो हम कमाते हैं ऑन ए डे टू डे बेसिस और उसमें से हम वेल्थ क्रिएट करते हैं, उसको निवेश करते हैं, तो इसमें बेसिकली 3 फैक्टर्स जुड़े होते हैं. तो वो पहले जो 3 फैक्टर्स होते हैं वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के होते हैं. हमारी नीड्स, हमारी वांट्स और हमारी लाइफस्टाइल. तो ये 3 चीज़ों में हमारा सारा जो एक चैनल है मनी का वो जाता है. लेकिन इससे ऊपर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पर्पस है वो है हमारे गोल्स. और उस गोल्स को हासिल करने के लिए हम जो एक प्रोसेस करते हैं वो है गोल प्लानिंग. अब गोल प्लानिंग अगर हम करते हैं तो ये ऐसी एक हवा में घूमने वाली चीज़ नहीं है, उसकी एक अप्रोच रहती है. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट योर गोल्स आर सिंपल विशेस इफ दे आर नॉट एक्शन्ड. तो हमारे मन में तो दिन में कितने सारे इच्छाएं आती हैं, कितनी सारी सोच आती है कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन वो जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी वापस दब जाती है जब तक हम उसको एक डायरेक्शन ना दें और मोर देन डायरेक्शन उसको एक्शन ना करें. तो गोल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग के फील्ड में अगर देखते हैं तो जो नॉर्मल गोल्स होते हैं सबके, वो मोस्ट प्रोबेबली तो कॉमन ही रहते हैं कि हम क्यों वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म. हम क्यों इतने सारे मेहनत करते हैं या इतनी सारी प्रोसेसेस में जाते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि हमको बस लाइफ में वो फुलफ़िल करना ही है. हमारा जीवन का एक ध्येय होता है. तो सिंपल तौर पे बताना चाहूँ तो चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, हम अपने बुढ़ापे में रिटायरमेंट अच्छी तरह से बिता सकें, तो रिटायरमेंट प्लानिंग होती है. तीसरा होता है कि हम आज कोई घर लेना चाहता है, खुद का घर, कोई 5 साल के बाद लेना चाहता है, कोई 10 साल के बाद लेना चाहता है, तो बाइंग अ हाउस फॉर स्टेइंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये सारे जो गोल्स हैं, प्लस ऐसे भी गोल्स होते हैं जो आपको मटीरियलिस्टिकली खुश करते हैं. तो मान लीजिए कि मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है, तो लेकिन अच्छी गाड़ी लेनी है, महंगी गाड़ी लेनी है, तो वो तो स्नैप करके हम ले नहीं सकते, प्लानिंग करनी पड़ती है. नहीं तो अपना सारा जो दूसरा एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है वो बिखर जाते हैं. तो अच्छी गाड़ी लेनी है, वेकेशन पे जाना है, वर्ल्ड टूर करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं. और गोल्स में एक और चीज़ होती है, सिर्फ पॉजिटिव गोल्स नहीं होते. काफ़ी सारी ज़िंदगी में, काफ़ी सारे प्रोफाइल्स में हमने ये भी देखा है कि ऐसे गोल्स भी होते हैं जो लायबिलिटीज़ होती हैं और लोगों को उन लायबिलिटीज़ को क्लियर करना होता है. कि मान लीजिए किसी के ऊपर एक डेट का बहुत बड़ा बोझ है, तो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी नहीं पाता क्योंकि उसको वो डेट क्लियर करने में उसका हाफ सैलरी निकल जाती है. तो वो भी एक गोल हो गया कि कैसे वो इस गलत चीज़ से बाहर निकले. तो गोल्स कैन बी वेरी डिफरेंट, ओके. एंड इन दैट देयर कुड बी लॉन्ग टर्म गोल्स and there could be short-term goals. Yes. And that we will talk about. Yes. But Kalpesh, what factors should we keep in mind while deciding our goals? Like if I want to buy a car or if I want to go for a long holiday, तो क्या मुझे इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत है? तो आप इसके लिए कोई भी गोल ले लो. सिर्फ आपकी कार लेनी है या आपको वर्ल्ड ट्रैवल करना है या घर लेना है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ओके. वो आपके मन की एक इच्छा है. ओके, प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. जी. So any goals which you decide to undertake or to achieve, there is a 5 step you should keep in mind. First of all, the goal should be written. The moment you write down your goal, you are putting your thoughts on paper. And once it is put on paper, you start thinking about it and, more importantly, actioning about it. Second, your goal, apart from writing it down, which is there, should be time bound. What I say time bound is, you cannot just say that, okay, I want to buy a house. The question is, when do you want to buy a house? So you want to buy a house in 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, 20 years? And similarly, all the answers will be there for all of your goals. मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे retirement होना है. So this points will help you do that. So first was written, second was time bound. Third important aspect, it should be realistic. Realistic matlab, if I say that you should be in awareness of your existing financial profile, there is no harm in saying that I'm positive about money and today if I'm earning 100 rupees, tomorrow I'll earn 200. That's fine, but that's for the future. You are planning for a goal today. So keeping your existing profile in mind, you should set a goal which is achievable, because that will be first, you will feel a certain sort of happiness when you achieve it. Correct. And second is, you will have fulfilled your goal and it will propel you towards achieving your other financial goals. पहले से आप अपने लिए एक इतना सारा बड़ा टारगेट रख दो जो आपके फिलहाल कैपेसिटी नहीं है अचीव करने की. आप कितने भी उसमें मेहनत कर लो, इट्स गोइंग टू लुक वेरी फार. So that is the third is, the goal should be realistic. The fourth aspect is, it should be action oriented, which I just mentioned, that goals are simple wishes Yes. if they are not action. And how do you translate those goals into action is helped by the financial planning process. What I mean action is, चलो आज मुझे किसी ने बताया कि मान लीजिए मुझे आज से 10,000 रुपये पर मंथ सेव करने हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट मुझे सिलेक्ट करना है, कहाँ से मैं ये चीज़ को प्रोसेस कर सकता हूँ, इसके बारे में कौन मुझे एक्शन या एडवाइस करेगा. तो आपको अपना एक इनिशिएटिव लेना है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक्शन मोड में जाना है. So in English we say you should never procrastinate. Yes. Never procrastinate. करेंगे, सोचेंगे, होता है, होते रहेगा is never going to help. So action oriented. And for the last point is a little bit non-financial, but I would like to add it from my side. The goal which you have should be positively intended. What I mean to say positively intended is, it should not be a rat race. So if you intend that my friend or my neighbor or my uncle and my aunt, I want to overtake their net worth, or I want to earn so much that I can put down certain people in life, or any of the other aspects of life which are not positive. It should be for your own satisfaction. It should make you and your family happy and should look ahead. So you cannot have a criminal design in your mind to achieve a financial goal. And it should be, simply speaking, legal and regulated. And one more factor I want to add, Kalpesh, over here, that most of the time, in especially जो हमारी young generation है, उनमें हमने देखा है, they just actually बहुत सारे लोग debt में हैं because they just want to fulfill their goals and they are not aware of it. कि आप अगर एक luxurious car ले रहे हैं या फिर घर ले रहे हैं, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा किसी से पैसे उधार ले रहे हैं या फिर debt पे चले जा रहे हैं. So we should always be clear in our mind कि हमें goals तो set करने हैं, लेकिन उन्हें fulfill कैसे करने हैं, उसका plan करना बहुत ज़रूरी है. So that is the point number 4, action oriented. Yes. और action भी ये नहीं कि हम गलत action लें, and that is positively intended. Yes. Correct. कि goal fulfill करने की चाह में we should not go on the wrong path. And that is where awareness comes into the picture. The role of a financial advisor who guides you on the right path is necessary. So like what you very rightly said, that's a beautiful point what you said, that people
have an idea that, okay, I want to reach there, but they don't know the road to reach it. And why do they want to reach? Because others have reached. And like what I said, like the series name, it's personal. It's your profile. Your profile and my profile cannot be the same. We have different life stages, we have different conditions, we have different dreams, we have different goals. So how can my goal or my dream be emulated by you? That's a simple aspect. Correct. And the most important part in why we call this investment linked goal planning is once we identify with the individual what's his or her financial goal, we then select the right products to help him achieve that goal. So if his goal is short term, he doesn't need to put his money in products which are risk oriented. He can always have a look at the products which are conservative. Now that is where your mental control, behavior comes into the picture. Your motive in life is to achieve something. You have set that target, not me. Yes. Correct? And I'm trying to guide you on achieving that goal. So, for example, if there is and I'm being very simplistic about it, okay? It is, if you have a goal which is coming up in the next 2 years, and you say you have to achieve that goal at any cost, and whatever money you have or whatever you're going to earn in the next 2 years, you cannot afford to lose that money. And the goal is achievable. So, what I said, realistic. Yes. Then the mode of investment for you is not equities, because equities is risky, but it is good over a long term. So the fixed income or the debt products could be the right choice for you. On the other hand, if you say my goal is 10 years away, and if you are able to take that level of risk, probably equity is the best way to reach there. In fact, it's the only way to reach there. Yes. Because you can take that risk a little bit, and most importantly, the goal is far away. And equity, as we all know, over a period of time rides out the volatility. But it is your goal, your time which you have set. So investment link, and where people go wrong is choosing the wrong product for the goal. And that is where then they start, cursing the product. True. So if, for example, if they have just a 2-year time horizon, and if somebody gives them a tip or a advice that right now the equity markets are doing well, and they put that money in there, and the equity markets, knowing their nature, turn around the other side, and he loses some amount of his money, neither would he be able to reach his goal, and he would be cursing the equity markets for that. So the problem here is wrong product selection and not the equity markets. So that is where investment linked goal planning is very, very important. बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कल्पेश यहाँ पे कि our mind has no control and we keep aspiring. So for that, to fulfill our dreams and to fulfill our goals, we have to take action, we have to set our goals. तो आप ये बात ज़रूर ध्यान में रख लें कि if you want to achieve something in your life, if you want to fulfill your dreams, you have to work on it. आपको अपने गोल्स तैयार करने होंगे, आपको अपने टारगेट्स देखने होंगे, एक्शन लेना होगा इनके ऊपर, सही प्रोडक्ट को चूज़ करके ही आप अपने सही ड्रीम्स या सही गोल्स को अचीव कर सकते हैं, वो भी टाइम पर। कल्पेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक बार फिर से इस सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए, और वापस हम एक बार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। कल्पेश, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्योर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। Absolutely, and that is the important part where people need a lot of clarification. Yeah. That how is investment planning done? Okay. So I am very excited to learn about this and I am sure आप लोग भी इस नए टॉपिक के बारे में जानना ज़रूर चाहेंगे। Stay tuned with Kotak Securities और इट्स पर्सनल सीरीज़ के साथ आप बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में एक बार फिर से कल्पेश और मैं आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इट्स पर्सनल सीरीज़ को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए। सो स्टे ट्यून्ड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.